Namaste learners, this is the second part of electric current and third chapter of NCERT. I am going to talk about the cell and grouping of cell, internal resistance, terminal potential, Kirchhoff'S law. I am going to start the first topic, cell. What is the cell? Cell is a device which converts chemical energy to electrical energy. Solutions yani electrolyte and electrodes. There are two electrodes. This is the two electrodes and the liquid is electrolyte. Okay, and the device which converts chemical energy into electrical energy is known as what? Is known as electrochemical cell or simply cell. And this electrode is known as anode. This is the anode. This is the anode. Anode is an electrode of higher potential in physics, and lower potential is known as cathode. But in chemistry, something is different. In chemistry, anode and cathode is defined by the oxidation and reduction. Our electrode which oxidize known as anode, and electrode which reduced known as a cathode. As for example, in Daniel cell has a copper pot outside the chemical solution, and this copper pot in physics is called anode because it has a higher potential, and in chemistry it is called cathode. A few more points. The current inside cell is always due to motion of both positive ions and negative ions. Okay, the current due to the cell inside the cell is due to the motion of positive and negative ions, but outside the cell depends upon the material which is connected, just like a semiconductor, conductor and more things. And a cell is said to be ideal. A cell said to be ideal whose internal resistance is zero or minimum. A cell is an ideal cell when internal resistance is minimum or zero. A cell to be a standard whose value does not change, means a specified, whose value is specified, and this is known as a standard cell. One example of a standard cell is Baston cadmium cell is usually treated to be a standard cell with EMF 1.0183 V at 20 degrees centigrade, and I will use this standard cell in potentiometer also. And few more definition as like a EMF. What is the EMF of cell? Okay, EMF is a electromotive force. The name is electromotive force, and it is misnomer. Misnomer is just the word which has meaning different as like name, known as EMF. Suppose that EMF, electromotive force. Electromotive force. Actually, the here is written as force, but EMF is not a force. EMF is potential difference across terminal of cells. Terminals of a cell. Okay, terminal of cell in open circuit. In open circuit, it means no current is drawn from cell, and this is the representation of cell. This is the representation of cell. The big line is plus and the minus sign. Plus sign means at higher potential. This is higher, indicates the higher potential, and this indicates the lower potential. And sometimes for the simplicity of numericals, it can be considered as a V equal to 0. And when or EMF is a work done per unit charge to complete around a circuit. One example I want to show you. Suppose that this is a pipe
Okay, and a man want to lift the ball. Suppose that the man wants to lift the ball from here. Suppose that a ball just pushes it and it goes in this direction, such like this. The ball goes in this direction. But in this case, the work done should be doing by the man to just lift the ball from here to here, and this work done is necessary, and this may be equal to mgh, this work done. Okay, mgh, because this is the ground, then lower gravitational potential, this is the higher potential, and the difference is mgh. In same way, in a circuit such like this is a higher potential and this is a lower potential. Suppose a positive electron moves from this end to this end, okay, just like in rotation, just like in this way. But due to the motion of electron from lower potential to higher potential, okay, but electron jumps from here to here by the efforts of the cell, इलेक्ट्रॉन अपने से ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जंप नहीं करेगा, इसके लिए इस सेल को वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ. ओके, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ. व्हेन a cell is connected as like this, when cell is connected as like this and this, and suppose that the E1 and this is the E2. E1 and E2 is the representation of EMF. E1 and E2. And then this is plus and this is plus, higher to higher, lower means higher potential, lower potential, higher potential, lower potential. Then it is called series combination. And the potential net EMF is E1 plus E2. Okay, the sum of these E1 plus E2. But when it is connected as like this, and suppose this one is E1 and this one is E2, and current is emitting in this direction. In this direction means E1 is greater than E2. It is sure, because current emits from higher potential to lower potential, and electron just move from lower potential to higher potential. A current in this direction, it means E1 is greater than E2, and the net EMF is E1 minus E2. The net EMF is E1 minus E2. And the same way, in same situation, and when current is flowing in this direction, suppose that the current is flowing in this direction, then net EMF is E2 minus E1, because E2, this one is the E1, this one is the E2. A current in this direction means E2 is greater than E1. Then E2 is greater than E1. Okay. Then in this situation, there are three situations here. When E1 and E2 is arranged as like this, then this is the equivalent, means equivalent EMF is sum of these cells. And if current drawn in this direction, then E1 and E2, just like E1 minus E2, if current is flowing in this direction, then E1 minus E2, and when current flowing in this direction, then E2 minus E1, because E2 is greater than E1, and that's why E2 minus E1. As for example, if it is 10 volt and this is the 5 volt, then 10 minus 5 equal to 5 volt is the net EMF. And here is also, if it is 10 volt and it is the 5 volt, then it becomes also the 5 volt. This is, and the second thing is, what is internal resistance? Internal resistance is offered by electrolyte and electrode of cell. Okay, electrolyte and electrode of cell. Internal resistance is the offered by internal resistance offered by
electrolyte and electrode of cell. This is interresistance and represented by a small r. A cell is just like this. This is cell, higher potential, lower potential, this is the resistance, and current is in this direction, and internal resistance is always connected with the negative terminal of cell. This is the internal resistance, a small r. Each and every cell has some resistance, and ideal resistance has the value of R is 0, as I discussed a few minutes previous. And this one is the R, and this is the current, and the potential difference is A and B. This is the potential difference between A and B. This is the potential difference. Then potential difference is, you can write I into R, or you can write in this, suppose the current in this direction and I want to write from this to this, then potential drop takes place here, then it is E, and if it is potential difference across the resistance, then it becomes I into R. Then this consider as a terminal potential, and this becomes V equal to E minus IR. This is the terminal potential. E is the EMF of cell, or EMF is the maximum potential difference between the terminal of cell. Maximum potential difference means when current is not drawn from the cell, and the potential difference is called EMF of cell. Or if current drawn from the cell, then potential difference across the cell is known as the terminal potential. There are two things. One is current is drawn from cell, then potential difference across terminals of cell is called terminal potential. And current is not drawn means open circuit. Then potential difference across terminals of cell is called, क्या कहते हैं इसको, EMF. तो EMF को आप डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस भी कह करके, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कह के आप डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. किसी भी यूनिट चार्ज को एक पूरा सर्किट में जो हम लोग उसको मूव कराते हैं, उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो EMF है. और तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि व्हाट इज द EMF. देन EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट और current drawn from the cell. This is the definition. And there are two types of cell. One is the primary cell, and second is the secondary cell. Primary cell, a cell which is used once discharging. एक ही बार उसका इस्तेमाल, डिस्चार्जिंग के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सेल. और सेकेंडरी सेल होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल वैसा सेल है जो डिस्चार्ज करने के बाद उसको हम बार बार, है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना, चार्जिंग, जो जिसको हम चार्ज कर सके, तो चार्ज कर सकते दोबारा उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे. और जो एक बार डिस्चार्ज हो गया उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा प्राइमरी सेल कहलाएगा. ठीक है, तो हम लोग ये में पढ़ लिए, डायलिसिस पढ़ लिए, टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ लिए, और टर्मिनल पोटेंशियल बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. The next topic is terminal potential by charging and discharging.
तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन अब ये आ गया। चलिए आते हैं। मान लिया जाए एक सर्किट ले रहे हैं, एक इस तरह का सर्किट लिए, ठीक, और एक रेसिस्टर भी लगा देते हैं चार्जिंग करने के लिए। अब ये होगा क्या, ये मान लीजिए कि ये E1 है, ये E2 है। E2 अगर बड़ा होगा E1 से या बहुत बड़ा होगा, ये भी कह सकते हो, तो E1 क्या होगा, चार्जिंग में होगा। E1 को क्या लिखेंगे, चार्जिंग में लिखेंगे। कैसे देखिए, अब ये जो है सेल है, यहां से करंट निकलेगा और इसमें इन कर रहा है। देखिए करंट इसमें क्या कर रहा है, इस बैटरी में करंट इन कर रहा है। तो करंट इन कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लिखिएगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, तो ये तो कहलाएगा भी, यही हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। तो अभी इसमें जो क्या लिखे थे हम लोग, इसमें अभी लिखे थे V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये तो डिस्चार्जिंग का केस हुआ, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग। और ये हो गया आपका चार्जिंग का केस। कैसे देखिए, अब करंट इसमें इन कर रहा है, मतलब ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहां लिखेंगे E1। E1 लिखिए, ये करंट इसमें इन कर रहा है, हायर टू लोअर, और रेसिस्टेंस के करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको आप लिखिएगा I इंटू आर। देखिए इसको अगर समझ में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चॉप्स लॉ पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी पढ़ाना नहीं है। केवल समझिए कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस में प्लस लेते हैं, प्लस लिख दिए। तो इस केस में अगर हम E1 को E ही मान ले, तो इस केस में हम आई आर ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम E1 को कंपेयर करने के लिए E ले लिए। तो देखिए ये जो केस है E माइनस आई आर है, और ये जो केस है V इक्वल टू E प्लस आई आर है। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अगर चार्जिंग का केस लीजिएगा तो E प्लस आई आर हो जाएगा, अगर डिस्चार्जिंग का केस लीजिएगा तो E माइनस आई आर होगा। दिस इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, एंड वन डेरिवेशन इज the formula of internal resistance, formula of internal resistance, formula of internal resistance, internal resistance। और एक और सेल के बारे में लिखे नहीं है, बता देते हैं। जितना टाइम तक उसको यूज कीजिएगा सेल को, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा। यूज कीजिएगा सेल को, इसलिए फ्रेशली जो रहता है जो बैटरी, जो सेल जो फ्रेशली मेड होता है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है, और जितना ओल्ड होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज दैट इन दिस केस I इज इक्वल टू टोटल EMF, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, total resistance, and this is V equal to IR, don't worry. Then EMF is E, then you write E, and total resistance is R plus R, then it becomes R plus R. Then the formula of I is E plus and E by R plus R. Then from equation 1, we can write V equal to E minus IR, okay? V equal to, and this one equal to E minus E into R by R plus R, okay? Then V is equal to E under bracket 1 minus R by R plus capital R, and this becomes V by E is equal to R plus R minus R by R plus R. R and R cancel out, then V by E is equal to R by R plus R. Am I right? R plus R. This is. And this may also write as like this. As like this. E by V is equal to R plus R by R.
then E by V equal to 1 plus R by R. Then I want to find the value of a smaller, because our purpose to find the formula of internal resistance. Then you can also write as like this, R plus R is equal to E by V into R, then R is equal to E by V into R minus R, then E by V minus 1 into R. This is the formula of internal resistance. And as you see, internal resistance is the depends upon EMF, terminal potential, and external resistance also. Okay. Then internal resistance, actually this is the constant things, and this is not variable, capital R. Capital R depends the value of current, and internal resistance depends upon the electrolyte and what? Electrolyte and electrode. And the formula is V equal to E minus IR. Suppose that this is V equal to E minus IR. If I is 0, if I equal to 0, then V equal to E, as you see. Okay, I equal to 0, then V equal to E. This one is V equal to minus I, means I is constant, I, and plus E. And this is equation of Mx plus C. Then the graph of this is as like this. This is, if I equal to 0, then V equal to E. V equal to G. If I equal to 0. And if I increases, the value of this is increases, and the terminal potential is decreases. And this is the graph of E minus IR. Once again, this graph is V equal to E minus IR, and you may write V equal to minus RI plus E, and this is Y equal to Mx plus C, and you compare these two equations. Then if I equal to 0 means I is variable, then you can also reverse the order I and R. Okay, and if I is 0, then V equal to E, maximum potential difference. And as current increases, then terminal potential decreases. The next topic is grouping of cell. This one is. And the first is series combination or series grouping. As you know, series grouping means a cell with internal resistance, this one is R, and also all cells are identical. That's why I am writing this one is the R, the EMF is E, and E, and for current I consider an external resistance, or just this is the external resistance of the circuit to withdraw the current, and current out from the positive end, and this is this. Okay, then I is the total current through the circuit, and this become is total EMF by total resistance. And for finding the current, we need total EMF. Then total EMF of circuit is what? Then E plus E and so on, and N numbers. This is the N numbers. N means number of identical cells.
number of identical cell. Then it becomes Ne. The total EMF is Ne, and total resistance. First of all, total internal resistance. Also NR means R plus R and so on, and this one is the NR. Then total resistance of circuit. Is equal to circuit means what? And this is R equivalent, and this is the net EMF, and this is the capital R external, this is, and this is R. Then total resistance means R equivalent plus capital R, means NR plus capital R, and you also write in the form of R plus NR, and by this formula total EMF is Ne and total resistance is R plus NR. Then the current in series combination is Ne by R plus NR. This is very simple, and therefore I is equal to Ne by R plus NR. If R is less than NR, then NR tends to 0, and I is equal to Ne by R. Means what? This is the current n times of single cell. In this case, maximum current is withdrawn. In this case, maximum current is withdrawn. And in another case, if NR is less than capital R, in this case R tends to 0, then I is equal to just Ne by NR, and it means E by R. And this is the current as like a single cell, means minimum current as like single cell. Means here the question is, if a cell having the total internal resistance tends to be 0, then the maximum current is N times of E by R, means single cell. This can be also understand by you, I is equal to N times of E by R. This is this formula. N times of E by R means current is maximum, current is N times of E by R. Here is current is E by R, and that's why the internal resistance should be very small for the maximum output current. Then this is the series combination, and in next topic, in series combination, for different value of EMF, this is the identical value of EMF. If the same case and due to the different value of resistance, different series combination, but EMFs are different. EMFs are two different cells. Means this one is the E1, and with the E1 interruptance is R1. This one is E1, this one is R1. Again, this one is E2, this one is R2. And this is the external circuit. As you know, the total I is total EMF by total resistance. Here, total EMF is what? E1 plus E2, and total resistance is what? R1 plus R2 or plus R. You may write R plus R1 plus R2 as you wish. Then maximum current is this. And in another way, the same topic may define in another way, may explain in another way. Same topic, explain in another way as like this. This is the E1, this is the R1, this is the E1, or this is the
This one is the E1, this one is the R1. Suppose from this I1 current is taken out from this I2 current. Actually, this is the series combination. Then current is I, not I1 I2. Current is I from the both cells. Okay, but potential difference is different. This one is E1 minus IR1, and this one is E2 minus IR2. Then total potential difference is V1 plus V2, means E1 minus IR1 plus E2 minus IR2. Then the E1 minus E2 plus, and this one is minus IR1 plus I2. For this combination as like this, and the external circuit is capital R, this is the capital R. E is the equivalent, this is the equivalent EMF. Equivalent EMF means you can draw as like this. You may draw capital R, this is the R equivalent, this is the E equivalent. And E equivalent is what? E equivalent, this one is the E1, this one is the R1, this one is the E2, R2, and E equivalent is equal to, from this equation, E1 plus E2. E1 plus E2. And R equivalent is as like R1 plus R2. And the equation becomes terminal potential between this point and this point A and B. The terminal potential is this, V equal to E minus IR. Means E means E equivalent, or R means R equivalent. This is, you may write the current, the formula of current is, if you want to write the current is, then the value of current in this circuit, I is equal to total EMF, equivalent by total resistance, then R plus R equivalent, and E equivalent is E1 plus E2 by R plus R1 plus R2. Then you here study by the two methods. One is the direct method, total EMF by total resistance, total EMF is E1 plus E2, and this one is, and this is the another way. Suppose I current withdrawn from these two cells, E1 and E2, these two cells. Then V1 is the terminal potential of this cell, E1 minus IR1. V2 is the terminal potential of this, E2 minus IR2. And the V is the net terminal potential, means V1 plus V2. And the equation is this. And the equivalent circuit of this is this. And V equal to E equivalent minus IR equivalent. Then I equal to total EMF by R plus R equivalent. Now the second case, parallel grouping of cell or parallel combination of cell. Each cell has the EMF E, and internal resistance is a small r, and a small r. And this is the M. M is the number of identical cell. Okay? And then the total EMF is what? E, capital E, no change. Because the potential difference between A and B is same. This is the parallel combination. Potential difference is same across each cell, and that is the E. And total internal resistance is R by M, because all are arranged in parallel combination. Means total resistance of circuit, means this one is connected there, external resistance, external capital R, this one is connected. Then total resistance of circuit is R plus R by M, this one. And I, total current, I is the total current of circuit. Total current of circuit means total EMF, as you know, total EMF by total resistance.
What is the value of total EMF? Then E by what? R plus small r by m. Means the formula of current is, final formula of current is I is equal to total EMF E and total resistance is R plus R by M. You can write in another way, I is equal to ME by RM, yeah, MR, the number is first, MR plus R. This your choice, in which way you want to write, either this and this. And case is if R by M is less than capital R, means R by M tends to 0. Suppose that, then I becomes R E upon R. This is the reverse. In such situation, I is minimum and like single cell. And if case 2 R by M, case 2 different case 2 R by M greater than R, then R tends to 0. In this case, I is equal to ME by capital R. And in this case, the current is M times of single cell. As you know, current is M times of single cell. Then this is the case of maximum current or maximum output current. Means अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम करंट को मैक्सिमम निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को मिनिमम रखना होगा, इस रेसिस्टेंस को मिनिमम रखना होगा। लेकिन पिछले वाले केस में हम लोग देखे थे कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा था तब ये सिचुएशन हो रहा था। यहाँ है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मिनिमम है तब ये सिचुएशन है ना। और मैक्सिमम करंट कब था? मैक्सिमम करंट था जबकि इंटरनल रेसिस्टेंस ये 0 हो जाए, इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो जाए तो वहां मैक्सिमम करंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिमम करंट है। तो ये चीज समझिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से फायदा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन से तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। अगर सिंपल समझ लीजिए, ऐसे हम समझाते हैं कि अगर आप बैटरी लेते हैं, ठीक, तो बैटरी लेते हैं, सपोज दैट कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो घर पे और उसको चाहिए कि हमको 6 वोल्ट का चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस या 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट में होता ही है, बहुत सारे टेलीविजन वगैरह होता है। तो जो बैटरी हम लोग खरीदते हैं, प्राइमरी सेल जिसको या सेकेंडरी सेल जो भी हो, तो जो बैटरी लेते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह से प्रत्येक का 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, तो हम लोग को पता है कि इस तरह से हम लोग कितना जोड़ देंगे तो ये टोटल करंट कितना हो गया। ये टोटल सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ये टोटल जो मिला करके हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस R है, तो टोटल ईएमएफ कितना होता है, टोटल ईएमएफ तो हम लोग जानते हैं कि 3 × 1.4 4.5 वोल्ट, मतलब हम 4.5 वोल्ट का क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम चला सकते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर हम सीरीज ना करके पैरेलल कनेक्शन में ऐसे जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, तो ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट होगा। तो जो इस रेसिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो मतलब जो इसमें ईएमएफ जो बनेगा वह 1.5 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करेगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब ज्यादा बैकअप देगा, ज्यादा समय तक चलेगा ये, ठीक है। देखिए आप लोग एम्पियर आवर लिखते हो, क्योंकि कोई भी बैटरी का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो कहते हैं कि एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट, एम्पियर एएच बोलते हैं, कितना एच का है, कितना, या एमएएच का भी बोलते हैं कोई लोग। तो या एम्पियर कितना करंट दे रहा है और वह करंट कितना घंटा के लिए दे रहा है,
जो करंट का वैल्यू है 1 ओम हो, सॉरी हाँ 1 एम्पियर हो या 2 एम्पियर हो, अब किसी में से 2 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, ये 2 एम्पियर करंट ठीक है, ये भी 2 एम्पियर निकाल सकता है, ये भी 2 एम्पियर निकाल सकता है, लेकिन 2 एम्पियर करंट कितना देर तक ये चलेगा, 2 एम्पियर करंट इसमें कितना देर तक चलेगा, है ना। तो ये बैकअप होता है कि अगर सेम करंट पे अगर इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, अगर करंट दोनों का सेम ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हम 2 एम्पियर करंट इसमें से निकाल रहे हैं या 1 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं, यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट हम निकाल रहे हैं, तो यह 2 एम्पियर करंट में, यह 2 एम्पियर करंट में कितना घंटा ये चलेगा, कब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर आवर। जब भी मोबाइल वगैरह खरीदते होंगे तो क्या करते हैं, एम्पियर आवर में उसका देखते हैं ना, चार है ना, एमएच बोलते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है और उसको बोलते हैं डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अलग अलग वैल्यू का मतलब अगर हम ऐसे ले रहे हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ऐसे, अभी छोड़ देते हैं इसको केवल ऐसे रखते हैं। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि ये क्या है, E1 यहाँ है, ये R1 होगा, ये E2 होगा, ये क्या होगा R2 होगा, इसमें से करंट जो निकल रहा है वो I1 है और इसमें से जो करंट निकल रहा है वो I2 है, और ये कितना होगा I होगा। तो अभी हम सिंपली लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसका टर्मिनल पोटेंशियल हम निकालें कि इसका V1 कितना है, तो अब तो फट से बोल दीजिएगा I1 E1 और माइनस I1 इंटू R1, और इसका क्या बोल दीजिएगा V2 इक्वल टू क्या बोल दीजिएगा I2 इंटू I2 और क्या हो जाएगा R2। तो सिंपली इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, 1 2 एंड 3 मान लेते हैं। हाँ, सिंस इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, it means what? It means V1 equal to V2 equal to V let. Then equation 1 becomes what? V equal to E1 minus I1 R1. Then I1 R1 is equal to V minus E1. Okay? And then I1 is equal to V minus E1 by 1 minute. E1 minus V, this one is the E1 minus V, then I1 is equal to E1 minus V by R1. Similarly I2 is equal to E2 minus V by R2, equation number A and equation number B. And from equation 1 I is equal to I1 plus I2, then I1 is E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2. Okay, then you may write E1 by R1, and this one is the E2 by R2. In this case V by R1 just like a minus V, okay, common 1 by R1 plus 1 by R2, this and this is I, equation number C. If you want to consider, take more step, then you can consider E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 or minus V by R2. Okay, then if this one and this one added in this way, or this and this is case, and now this can be written as E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2 minus V R1 R2, and this becomes R2 plus R1. This is V R2 plus R1 by R1 R2 is equal to E1
R2 plus E2R1 by R1R2 minus I, and it becomes V is equal to E1R2 plus E2R1 by R1R2, and this is in division, and that's why R1 and R2 in numerator and R1 plus R2 in denominator, minus I, and this becomes R1 R2 in numerator and R1 plus R2 similar way. This is, and this cancel, means V equal to, the final equation is equal to E1 R1 plus E1 or E2R2, E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 minus I R1 R2 by R1 plus R2. This is the equation, final equation. And if you want to compare a circuit just like this one is the equivalent and this is the R equivalent, this is the E and current is I, this is the equivalent, okay? Then the equation of terminal potential is equivalent minus I into R equivalent. R equivalent. Equation number capital A. Then this equation, compare this equation with equation capital A. Compare this equation with equation A. Then you will find E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2. This is, and R equivalent is equal to R1 R2 as like a parallel, R1 plus R2. Then outcome of these two equations is equivalent, and the way to write or learn E2. First you write the E1, then write E2 R2, and if you write E2, then write R1 by R1 plus R2. This is, and R equivalent is similar as a parallel combination, R1 plus R2. This is the two outcomes of parallel combination of different सेल. अगर दो सेल डिफरेंट हो तो उसका जो हमको इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकालिएगा, ठीक है? ये नहीं कि आप अभी मान लीजिए कि कोई 20 वोल्ट कोई सेल दिया हुआ है, इस तरह का कोई सेल दे दिया, ये 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. दूसरा कोई 20 वोल्ट का सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम का. तो अब ये कितना, कौन सा बैटरी करंट इसमें सप्लाई करेगा, और कोई भी 10 ओम का या 5 ओम का रेजिस्टेंस आउट में मतलब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है. तो इसके लिए आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है? अब इस सेल में कितना ईएमएफ होगा, तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा वह इक्विवेलेंट तय करेगा कि कितना है. E1 है 10, तो E1 जब लीजिएगा 10 लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा E2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.5 प्लस, अगर E2 लिख रहे हैं 20 तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा E1 से और दोनों को जोड़ दीजिए, जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए. तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 × 5 प्लस 25 ये और 20 कितना हो गया, 25 बाई 1.5 वोल्ट. ये आपका इक्विवेलेंट आएगा. लेकिन अगर ये दोनों सेम है, तो अगर ये 10 वोल्ट है ये भी 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट ही होगा. लेकिन अगर ये 10 वोल्ट है ये 20 वोल्ट है, तब आप इस फॉर्मूला से इक्विवेलेंट निकालिएगा और इस फॉर्मूला से आर इक्विवेलेंट निकालिएगा. एक लास्ट ग्रुपिंग है, मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. हाँ, एक बता देते हैं आपको कि जो प्रीवियस वाला टॉपिक था डिफरेंट सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ये मैक्सिमम 2 से 4 बार पूछ चुका है तक में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लगा लीजिएगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, इसमें सेल जो है आप देख रहे हैं सीरीज में भी बहुत सारा रहेगा इस तरह से, जैसे n टर्म्स आप देखे थे फर्स्ट केस में, उसी तरह से n टर्म्स होगा, n टर्म्स का सेल इस तरह से कनेक्टेड होगा, n टर्म्स का, इधर n है, और इधर जो रो बनाएंगे हम वो m टर्म्स का होगा, m रो होगा, देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सारा है इस तरह से, बहुत सारा, कितना बनाइएगा, डॉट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बहुत सारा है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हैं करंट निकालने के लिए, अगर रहेगा ही तो करंट कहां से निकालिएगा। सबका जो वैल्यू है वो तो आपको लिखना ही है, ये आपका E है, R है, E है, R है, सबका वही है, सेम टोटल सेम। और अगर n है और इधर क्या हो जाएगा n जो है आइडेंटिकल नंबर ऑफ आइडेंटिकल से, इन नंबर ऑफ आइडेंटिकल से एंड m जो है नंबर ऑफ रोज है, कितना रोज है ये। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सेल, तो कितना हो जाएगा m इंटू n, इसी को कैपिटल M भी कह सकते हैं, m इंटू n। अब R तो है इंटररेसिस्टेंस। अगर हम कह दे कि टोटल EMF पूछ दे हम कि टोटल EMF कितना होगा, पता नहीं आप लोग कितना जवाब देंगे, लेकिन टोटल EMF जो होगा इस फर्स्ट रो का तो n ही होगा, इस रो का भी n ही होगा, इस रो का भी n ही होगा, इस रो का भी n ही होगा, बाकी सब पैरेलल है, माने फाइनल जो टोटल EMF होगा वह n ही होगा। इस रो का n, इस रो का निकालिएगा तभी n ही होगा, इस रो का भी निकालिएगा तो n ही होगा, प्रत्येक रो का n ही होगा, और सब क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपका A और B है, हम बता चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी कॉमन, ठीक है। तो NE हो गया, A भी NE, A भी NE, A भी NE, टोटल NE, टोटल EMF कितना हो गया NE। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिएगा तो पहला रो का हो जाएगा NR, सीरीज में मतलब RS निकालिएगा तो NR, और कितना है तो पैरेलल में फिर है, पैरेलल निकालिएगा तो कितना नंबर का है तो NR बाई M, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हो गया NR बाई M। और टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट आप निकालोगे तो कितना निकल जाएगा R प्लस NR बाई M, ठीक है। यानी कि फाइनल जब हम बात करेंगे कि इसका जो फाइनल सेल बनेगा, एक इक्विवेलेंट का सेल बनेगा, वो इस तरह के बनेगा। ये तो आप R इक्विवेलेंट समझ ही रहे हैं, ये टोटल EMF समझ रहे हैं, और ये टोटल रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। ये सारे के बदले में ये एक डायग्राम बन गया जिसका टोटल EMF ये होगा, और जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तब तो करंट का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट तो आप लोग को जानते ही हैं, क्या जानते हैं, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, है ना, ये तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए। टोटल EMF इज NE और टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस NR by M, means total current is this. You may write this way, MNE by MR plus NR. You may write this. And I should be maximum if MR and NR is equal. Okay, MR and NR is equal. Means if MR is equal to NR, means R is equal to M
nr by m. This is R is equal to nr by m. Then I is the maximum current flows in circuit, and this is ne by what? This one is equal mr equal to nr, means either 2mr or either 2nr. This is either 2mr or 2nr. From KCL and KVL. KCL means Kirchhoff'S करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ, and it is based on the conservation of charge, based on conservation of charge, based on conservation of charge. In this way, suppose at a junction, this is the resistance, this is the resistance, and this one is, and suppose this one is also, and this is junction, and the current coming from this, and this one is the I1, this one is the I2, this one is the I3, and this one is the I4. Suppose one more, and this one is the I5. According to this law, the current, the algebraic sum कह सकते हो, the algebraic sum of all currents at a junction कहते हैं जहां से करंट आ रहा हो, वहीं से जा रहा हो, उसको जंक्शन कहते हैं. At a junction is 0. और एक कंसीडर कर लीजिएगा कि इनकमिंग को पॉजिटिव कहिएगा और गोइंग को नेगेटिव कहिएगा. मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अलजेब्रिक सम 0 होगा. मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. और कमाल का बात है, एक सेंटेंस में लिखना, एक टर्म में लिखना हो, द समेशन ऑफ I इज 0, लेकिन यहां लगा दीजिएगा एट ए जंक्शन. KVL इज Kirchhoff'S पोटेंशियल लॉ, या इसको लूप लॉ भी कहते हैं. और बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. इसमें क्या होगा कि अगर कोई सर्किट आप ले रहे हो, कुछ भी, इतना भी बड़ा सर्किट ले रहे हो इस तरह का, है ना, इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है. और इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर रहता है और ढेर सारा क्वेश्चन सोल्व होगा. अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है. सपोज ये जो है आपका रेसिस्टेंस, ये R1 है, रेसिस्टेंस R2 है, रेसिस्टेंस R3 है, ये E1 है और ये E2 है. अब ये कंफ्यूजन है, ये तो पता नहीं चल रहा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, कहना बड़ा मुश्किल है. तो करंट कैसे निकालिएगा? करंट निकालिएगा नहीं. तो मान लीजिए कि सेल में कि ये I1 करंट यहाँ से निकल रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ से I2 करंट निकल रहा है. तो लूप मानना है, नाम देना होगा A B C D E और F, नाम दे दिए हम. और इसमें लूप कंसीडर करना होता है. और लॉ कहता क्या है कि समेशन ऑफ, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 इन ए लूप. लेकिन यहां लिखिएगा इन ए लूप. मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द component, circuit component is 0. And here two conjunctions, just like a potential drop. Potential drop means what? Potential drop means higher to lower, HIGHER, higher to lower potential. Higher to lower potential होगा तो इसको हम लोग potential drop कहेंगे. अब potential drop taken to be positive, potential drop taken to be positive,
एंड पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल राइज का मतलब होता है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। इसको हम लोग बोलते हैं टेकन टू बी निगेटिव, पोटेंशियल राइज टेकन टू बी निगेटिव, पोटेंशियल राइज टेकन टू बी निगेटिव। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते भी होंगे उल्टा बताते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप उसको सीधा करके लिखिए उल्टा करके लिखिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक को आप प्लस लीजिएगा तो उसके अपोजिट को क्या लीजिएगा, माइनस लीजिएगा। हो सकता है कोई टीचर अलग पढ़ाते हो, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप टेकन टू पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज टेकन टू बी निगेटिव। अब देखिए, अब आपको लूप कंसीडर करना होगा। सपोज आप मान लीजिए कि लूप 1 है और इसी को मान लीजिए कि लूप 2 है, हम मान लेते हैं। तो लूप 1 जो हम ले रहे हैं, लूप 1 जो ले रहे हैं उसका नाम भी दे सकते हैं आप, क्या लीजिएगा, ए बी और ई एफ ए। हम एक लूप, इसी को मेश भी कहते हैं, मेश भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं। तो ए बी ई एफ ए ले लीजिए, ठीक है। हम ए से बी तरफ जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में करंट हम कंसीडर किए हैं उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट लीजिएगा ए पे और बी पे, तो यह पोटेंशियल हायर होगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा। अब एक सवाल होता है कि सर इसमें कितना करंट जाएगा। तो देखो, एक तो तय बात है कि इससे I1 करंट गया है, इसमें से I1 करंट आएगा, तो ये तो I1 करंट इसमें जाने वाला, तो ये तो I1 जाएगा ही जाएगा, इसमें भी I1 जाएगा। और ये I2 आया है इस सेल से, इसमें भी I2 जाएगा। I2 तब ना जाएगा जब I2 आएगा, तो इसमें चला गया I2 करंट, इसमें चला गया I1 करंट, और इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2 करंट होगा। तो पहला लूप लिए हैं ABEFA लिए, ठीक है। तो A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप है। अब कंसीडर कितना किए हैं करंट, I1, तो I1 कंसीडर करंट किए हैं, तो आप लिखिएगा कि I1 R1 प्लस में ले रहे हैं, प्लस में फिर क्यों ले रहे हैं, फिर समझाते हैं, यही समझना है। प्लस में इसलिए हम ले रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब करंट, अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसमें क्या होगा, तो करंट जब इस केस में आइएगा तो इस यहीं पर हायर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, तो करंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ निगेटिव देख करके मत हटाइएगा, ये निगेटिव से कोई मतलब है। निगेटिव भी अगर कोई पूछ दे कि -5 पड़ा है कि -10 पड़ा है, तो क्या जवाब देंगे, दोनों तो निगेटिव है। -5 पड़ा है कि -10 पड़ा है, नंबर लाइन को देखिएगा तो -5 यहाँ आता है, -10 यहाँ आता है, तो ऑब्वियसली क्या है, -5 पड़ा है, तो हो सकता है -5 हो सकता है -10 हो, इसलिए निगेटिव साइन से नहीं मतलब है। इसलिए कहते हैं कि करंट के डायरेक्शन में जब जाइएगा तो हमेशा होता है पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ लिख देते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि अक्रॉस द रेसिस्टेंस potential drop takes place in the direction of current. Potential drop in the direction of current. In the direction of current. ये बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा रेसिस्टेंस के क्रॉस में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। तो I1 R1 हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप किया, उसके बाद इसमें जाइएगा I1 प्लस I2 लीजिएगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ R3 ले लीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हम इसी का सम निकाल रहे हैं, इसके क्रॉस अब इसके क्रॉस। अब तीसरा टर्म में आ रहा है सेल आ रहा है, इस लूप में कौन आ रहा है, सेल। तो सेल का ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल राइज कर रहा है। तो पोटेंशियल राइज मतलब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस होगा, तो माइनस लिखिएगा कितना, E1, और सब मिला के 0। यही तो हो गया समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम सोल्व नहीं कर रहे, बस समझा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा लूप बनाएंगे, लूप नंबर 2 लेंगे। लूप नंबर 2 कौन सा है, ले रहे हैं BCDEB, ठीक है।
बी सी डी ई बी। तो बी सी ई डी बी में क्या लिखिएगा, अगेन जो है करंट इधर आ रहा है, देखिए अब यहां से रिवर्स हो गया है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं बी से सी में, करंट आ रहा है उल्टा, तो अब यहां माइनस लेंगे I2 R2, मतलब पोटेंशियल राइज हो रहा है। क्यों बताते हैं, देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, जब करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ हायर पोटेंशियल है और इधर क्या है, लोअर पोटेंशियल है। करंट इस डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल, इस पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इसका मतलब हम जा रहे हैं किधर, बी से सी जा रहे हैं, इसलिए यहां पर माइनस लिखे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इसमें तो कोई सेल है नहीं, फिर यहां आता है। अब देखिए ये जो है ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, माने पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तब यहाँ E2 को प्लस लेंगे। नेक्स्ट जो है अब E से B की तरफ जा रहे हैं, हम माने हैं कहा, हम कौन लोग, बी सी डी ई माने हैं, बी सी डी ई बी मीन्स बी से सी, सी टू डी, D to E and now E to B, then E to B in reverse direction minus I1 plus I2 or into R3 equal to 0, equation number 2. And the main purpose of Kirchhoff's law to make the equation as like this equation, this equation, this equation, and also current. This is the junction law, here is junction law applied, because at this end I1 and at this end I2 and it is a junction and total incoming current is equal to total outgoing current. That's why in this junction means, suppose that at in this case the I1 current flowing from this is the junction, and I2 current is this, and this one is the R1, this one is the R2, and this one is the R3, and this is unknown current I. This is the unknown current. Then incoming current. Then I1 plus I2, and this is the outgoing current minus I equal to 0, and this is I is unknown. Therefore, I is equal to I1 plus I2. This is means this current is I1 plus, and that's why I am writing here I1 plus I2, I1 plus I2, and that's what. Then the summary of these topics is the summary, the few points. The summary is summation of current equal to 0 but at a junction, summation of potential difference across the cell and across the resistance is 0 in a loop, but in a closed loop और loop closed, ठीक है। लेकिन ये नियम फॉलो होगा जब इन क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज होगा तब ये नियम लगेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप टेकन टू बी पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप टेकन टू बी पॉजिटिव। अब पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स हायर टू लोअर, है ना, आवर एजम्पशंस या higher to lower. Potential drop means higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, or in the direction of current, in the direction of current, potential drop takes place. And next, potential rise taken to be negative. Potential rise means lower potential to higher potential, or our consideration is opposite to direction of current, अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा किरचॉफ्स लॉ से
वो मैक्सिमम आपका सोल्व हो सकता है, लेकिन हो सकता है इन द सेंस कि अब डिपेंड करता है कि आप जो है उसको कितना आप लेके चल रहे हैं, कितना आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिपेंड उसी पे करता है। This is a few points to understand about the superconductor. Superconductor is a material and it discovered by the Caroline and a substance behaves as a superconductor at a very low temperature and resistance of this becomes zero. मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो बहुत लो टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस उसका जीरो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है मरकरी। उसी तरह से पीवी जो है वो 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत कम है, ये टेम्परेचर बहुत कम है, केल्विन में है 4.2 केल्विन है ना, ये टेम्परेचर बहुत कम है और ऐसा प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करने लगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है इससे, और ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग का एनर्जी जो है आज के डेट में जो एनर्जी है वो ट्रांसमिशन लाइन पावर हाउस से हाउस तक पहुंचने में, इंडस्ट्री तक पहुंचने में बहुत सा एनर्जी का लॉस होता है। वह लॉस जो है हमारा बच जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आप सेंड कर दिए, माने फ्लो करवा दिए, तो वो बहुत समय तक परसिस्ट indefinitely without any applied EMF, बिना कोई EMF सप्लाई किए हुए बहुत देरी तक करंट रहेगा। तो एक जीके टाइप का है। उसके बाद एक टंगस्टन आप लोग पढ़े होंगे, आजकल तो फिलामेंट का बल्ब नहीं आता है, लेकिन फिलामेंट के बल्ब में टंगस्टन नाम का मेटल्स जो है यूज होता है, उसका रेसिस्टिविटी बहुत लो लेते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कोई भी हीटर है तो उसमें एक नाइक्रोम वायर लगा होता है, ठीक है। और फ्यूज जो आप देखते हैं हीटिंग इफेक्ट का यूज है, तो फ्यूज जो है एक एलॉय से बना होता है, उस एलॉय का नाम है टीन लेड एलॉय। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेसिस्टिविटी भी लो होता है।